ये देख लिया हमारे शहजादी, हमें कह रहे थे कि 8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और अभी 8:30 बज रहे हैं और ये अभी तक सो रहे हैं। और ये मेरा क्राइम पार्टनर, इसके बगैर ट्रिप का कोई मज़ा नहीं होता यार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तक सो रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? मती जानी इधर देख। कल रात को 4 कॉल किया कि हम सुबह 8 बजे यहाँ से निकलेंगे और अभी 8:30 बज रहे हैं और ये सो रहा है। ये घड़ी भी है और अभी तक सो रहे हैं। कल रात को मुझे 4 कॉल किए कि जल्दी आओ, जल्दी आ जाना, हम सुबह 8 बजे यहाँ से निकलेंगे। अरे सदीक भाई क्या मसला बन गया? टूर गाइडर अभी बाइक नहीं मिल रहा, एक बाइक कम है। धोखे हो गए। अब सब आकर बैठी हुई है लेकिन एक बाइक नहीं है अभी। बाइक नहीं मिल रहा है, बस अभी ताश खेल रहे हैं। ढूंढते थक गए हैं सब। जमुंग मैनेजर से अब डॉक्टर से अब प्रोग्राम जो करा वो ट्यूसडे वाजे ना कंबल है सेट करे बाबू को फोन करे माशा बोलता रहा चर्चिला जो बोला वो सर दर्द गोलियां को मे बी बाइक वाजे ना सर से दर्द शी निश्चित जो बोला वो लैपटॉप पे बोला उर्दू क्यों हो रहा है ये इसकी ज़बान कौन समझेगा? और इसके बाद इसका प्रोग्राम बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के दिन का सीन कुछ इस तरह के, हम अभी जा रहे हैं तिरा। हमारे पूरी क्लास का एक ट्रिप अरेंज हो गया है और इस ट्रिप की डिटेल आपको सदीक भाई देगा। अच्छा सदीक भाई, इस ट्रिप के बारे में कुछ बताइए। Assalamualaikum. As you know that we have last attended a tour जो कि मशहूरी पे था and it was good. So about having that experience, हमने सोचा that why not हम अपने ही areas को explore करें. So we were planning actually from last month, but एक अचानक सा trip आ गया and क्योंकि हमारे एक weekend था and most probably we are graduated now. So हमारे जितने भी दोस्त हैं, some of them are on job, some of them are on studies. So ये weekend हमारा free था. So we thought that why not let's explore this and for the one night. So our plan was सुबह 8 बजे निकलना, लेकिन unfortunately due to some reasons we weren't able to go there at 8. So अभी 12 बज रहे हैं and 12:30 हो गए हैं। Oh 12:30 हो गए हैं। So we are going now and hopefully हम शाम तक पहुंच जाएं क्योंकि winters are here, so दिन छोटे होते हैं and we are looking forward that हम उधर पहुंच जाएं and probably we'll just go and wait or stay. So there are 2 places. The one is जो कि एक संबुक नाम का एक एरिया है, उधर एक होटल खोला है and it's a good initiative for the tourist जो कि ये एरियाज, इस साइड वाले एरियाज एक्सप्लोर करना चाहते हैं. And the other one is there is our friend name is Mahdi and we will meet him there. So we'll see हम किधर स्टे करते हैं. So let's tune. अभी हम ये अपने एक दोस्त के लिए रोके हैं क्योंकि एक बाइक पीछे रह गई, तो अब उसके लिए इंतज़ार है कि वो पहुंच जाए, फिर उसके बाद आगे जाएंगे. हमारा एक बाइक आगे निकल गया है और एक पीछे रह गया, हम तो इधर इस दरमियान में फंस गए. अब पीछे वाले के लिए इंतज़ार करें कि वो आ जाए तो फिर इकट्ठे जाएंगे और वो जो आगे गया वो आगे रुके हुए. बाइक रियूनियन हो गया अभी इधर सब इकट्ठे हो गए, तो इधर से फिर हम आगे जाएंगे और सामान वगैरह उठा रहे हैं दुकान से, तो इसके बाद हम आगे जाएंगे.
stuck in my head, you know I can't forget it. I try to move on, but you're the one that I dream about. I sit alone in my room, drawing up pictures of blue skies. We've been apart for so long, I'm always replaying all the pictures and memories stacked up in my head. I wish I could let you go, I wish I could just forget you. I can never shake you off. You're stickier than my super glue. I can never shake you off. I'm always trying to get rid of you. I'm never shaking you off. तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिए, 4 बज रहे और उतमन खेल या कौन सी जगह वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अभी बाइक ख़राब हो गई, उसके रेस में कुछ मसला है। अभी हमारे एक दोस्त वहाँ पर लगा हुआ है, उसको ठीक कर रहे हैं और जल्दी से ठीक हो जाए, वरना बस फिर यही रात हो जाएगी। तो चलो देखते हैं ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। खिदमतें गलत करती हुए हमारा टूर गाइड खिदमतें गलत कम दे रहा है। So much higher, fly. So much higher, fly. So much higher, fly. So much higher, sky. Lines and clouds are below us now. Sky. Okay, so finally we have reached at our so-called guest house and हम इधर थोड़ा सा stay करेंगे, do some tea and after that क्योंकि बहुत सर्दी लग गई है, you can see my hands comparatively to the cohort it's like उधर 17-19 चल रहा है and I think that इधर 9-10-7 इस तरह चल रहा होगा, so cold and हम अभी हैं like in the middle of Kalaya. Like from at the start I've told you that हम Kalaya जाएंगे and we are at the middle of Kalaya and we are at our friend's we can say guest house, like hujra in our language. So you can see it's kind of like in a stage of building and abhi ban raha and ye dekhe and that's enough so I will show you the room and uske baad dekhenge like it's our room for the night. So you can see हमारे कुछ बीमार पड़े हैं, जिनको सर्दी लगी है, मलिक साहब को सर्दी लगी है, सर जी को सर्दी लगी है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इस व्लॉग में ये होस्ट क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये हमारा टूर गाइड है। Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Living mirrors dreams when I think of you and me. Don't wanna leave. वो रहे हमारे दोस्त और हम इतना पीछे हैं उनसे। बस व्लॉगर का यही नुकसान होता है कि जब शॉट लेते हैं तो सब आगे निकल जाते हैं और हम पीछे ही रह जाते हैं। It's all forgiven to my eyes. The tide has turned around. Just listen to the sound. Two hearts beating time. मैच के शौकीन बाहर बैठ के मैच देख रहे हैं, इतनी ठंड है और ये बाहर देख के मैच देख रहे हैं क्योंकि अंदर नेट काम नहीं कर रहा। नेट कारना का यार और इज्जत सवाल है तो ये फोन रखो यार जमाला से सही फोन रो आपला यार सही